First, you have to write your assignment. Then how you can write your assignment? How you can write your assignment? You just see the assignment question, write down the questions along with answers. Suppose question number 1A, the question is area of the rectangle. Find out the area of the rectangle in C language. You just write down the area of the rectangle in C language. After that, you write the program. Okay? You have to write in a A4 size paper. A4 size paper with margin. With margin. Clear? Okay. In the first page of the assignment should be written Indira Gandhi National Open University. It may be a DTP. It may be a printed pages, or you can also write in your handwritten. No problem. It may be a printed or handwritten. No problem. Indira Gandhi National Open University. Second thing is your registration number. Registration number का मतलब है क्या? Enrollment number, right? Next name, next semester, program. जब कोई तुमको पूछेगा व्हाट्स योर प्रोग्राम, what you have to say? What you will say? What's your program? Someone tell me. अरे तुम्हारा प्रोग्राम का नेम क्या है? बोलो, कुछ गलती होगा तो मैं बताऊंगा ना. Master of Computer Applications. Absolutely correct. MCA, Master of Computer Application, or MCA. You can write also MCA. Program means MCA, right? तभी मैं बोलूंगा कि व्हाट्स योर कोर्स कोड. MCA फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा कोर्स कोड क्या है ना सर? MCS-11, MCS-12, MCS-13. देखो MCS-11 उसका कोर्स कोड है. कोर्स का क्या कोड रहता है? उसका नेम उसका क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्राम, राइट? ये होता है जी सर. तो पहले तुमको असाइनमेंट लिखना है. असाइनमेंट को 31 जनवरी पहले से तुमको डिपॉजिट करना है कॉलेज में. फिजिकली आके देने से बहुत अच्छा है. नाउ आई एम योर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, तो असाइनमेंट में तुम्हारा बहुत कुछ वैल्यू है. इफ विल नॉट सबमिट, नो प्रॉब्लम्स, राइट? इफ विल नॉट सबमिट, नो प्रॉब्लम्स. Will not submit, no problems. If you will submit, then you will success, right? Okay. Assignment. Bipin sir, कुहतु कौन कहू चाहूँ? हेलो सर, एक्चुअली जो असाइनमेंट आमे बेरमपुर देई छे, हाँ, सपोज सेटा तांको द्वारा मिसप्लेस हे थाई पारे या तांगे खोजिबा को मना करंती बा एमति किछ. हाँ तमे आउथर दे दियो ठीक, किछि प्रॉब्लम नै. बरमपुर जोटा देई चंती, बरमपुर जेडी देई चंती, बरमपुर देले से सेटा को इवैल्यूएट करिवे नाही कि कोन करियो मु जाननी कि आम पाखु पठेइबे. से तो केबे पठेइबेनी. बेटर अब तमे जाकी सेटु नेई आस, नेई कि एठी नहीं इनके समय खोजिया को मना करिवे. सपोज सर कोडी थिबो कि खोजी कार्ड समय कारण बेरमपुर के आउथर दे देबो. कोन अछि पोस्टल लेट दे देबो. कोन अछि, नो प्रॉब्लम. पोस्टल में यू सेंड दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट इन द पोस्टल, नो प्रॉब्लम. किंतु हमको लेखिया पड़े तो समय दरकार. किंतु सर ए कम समय रे माने कम दिन रे लेखि तो हबनी ना सर, बहुत गुडे लेखि नहीं सेटा कम. हां से सेति पय तो कोई तांको जाई कि दिने तमे जोडी देइ जे तांको रिक्वेस्ट करो, दे विल आल्सो रिटर्न, आई थिंक, बिकॉज़ दे आर टीचर, दे विल नॉट Sir, I have personally submitted at KIT campus too, but still the status showing not submitted. Your assignment will be evaluated in next month. Okay, thanks for the detail, sir. Okay. Yeah. Your assignment will be evaluated in next month because the 31st is your last date.
Yes, sir. Okay, Yeah. with after that we will provide that particular assignments, all the assignments to the concerned counselor or faculty. Okay, thank you, sir. Sir, one thing I want to know, today I've called Bijay sir, and I actually want to know that the question pattern was what type of question we'll get. I want to know, sir. Listen to me, Vijay sir, he is a clerk. Yes. Okay, Okay. how he can explain Vijay Sir, Panda sir? so, Vijay sir, Panda, he is our clerk. How sir, he can we explain? don't know, sir. Actually, sir, we don't know, sir. Designation, Okay, sir. those who will I am those who will teach you. Yes, sir. You ask them. Okay. Okay, sir. So we will just got contacted with you after getting involved in the group, sir. Previously, we Okay. don't know, sir. Actually. No problem. You don't worry. You Yes, read properly. You read properly. Whatever the sir. books you have, you have got that particular books. You just refer it and read it properly. You must success. Okay. Sir, actually, I have got the books 17 days before, sir. Uh, Previously, I don't have any books, sir, due to okay. Corona problem. Okay. No, don't worry. Okay. Sir. Now I'll start your session. Okay, Okay, sir. the students, your session is what your chapter is what who can say what is the course code of problem solving and programming? What is the course code of problem solving and programming? Who can say? MCS-011. Yeah, MCS-11, right? Okay, जी सर बिल्कुल before going to MCS-11 contents, okay, first you have to know what are the course codes available in your first semester. First one is MCS-11, problem solving and programming. Second one is MCS-12, computer organization and assembly language programming. Third one is MCS-13, discrete mathematics. Fourth one is MCS-14, system analysis and design. Fifth one is MCS-015, communication skills. Last one is MCS-016, internet concept and web design. Okay, this is one practical papers. Another is MCSL 017, इसमें सी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, सब मिलके। तो देखो यहाँ पे मैं टुडे आई विल डिस्कस अबाउट MCS-11, राइट? व्हाट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट MCS-11. MCS-011. 011 you can also called that particular chapter MCS-11, right? Okay, I'm sharing. Uh, Students, is it visible or not? The screen is visible or not? No, सर sir. नॉट Not, sir. विजिबल No, sir. Why? So, but the letter size is small, sir. Can you do full screen No. mode, sir? I can't visible, Kindly sir. just no. Listen to me. You just maximize your screen. You just maximize your screen. टच स्क्रीन मैक्सिमाइज करो, जैसे फोटो को मैक्सिमाइज करते हो करो। देखो Yes, sir. वर्क Visible. विजिबल, राइट? होगा देखो देखो। Yes, sir. After maximize, it is visible. हाँ, you have to maximize. Your screen is very short screen है, okay? So how can see? You have to maximize the screen, right? Sir, maximize କୋଉଠି option ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ହାତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ maximize କେମିତି କର? Priti just double click. Priti just ଆଚ୍ଛା double ଆଚ୍ଛା, click. ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କର, କାହା ଉପରେ କହିଲେ? ସେଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କର। सर बट इट shows like C only, nothing else is
ନା ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନଟା ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିପାରୁନ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି। ହଉ ଦେଖ ସେ ଯେତିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଲେଟର ବଢେଇ ଦେଲି ଦେଖ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓକେ Okay, okay. Actually, before going to the program, first we have to learn algorithm. Okay, who can say what do you mean by algorithm? An algorithm is a step by step solving a problem. Step by step solving a problem is known as algorithm. An algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value or set of values as input and produces set of values or some value as output. Thus, this algorithm is a sequential computational steps that transports the input to the output. Did you understand or not? That means the step by step solving a problem is known as algorithm. Step by step solving a problem is known as algorithm. इसका मीनिंग क्या है? बुझी पारलो ना बुझी पारलो स्टूडेंट्स? What do you Yes, mean by sir. Yes, step by step? Huh? Suppose giving one tax, right? If you will perform that task sequentially, then we can say that is algorithm, right? The features or characteristics of algorithm. In addition, all algorithms should satisfy the following criteria. First one is input. Whenever we want to do some things, first we have to input the data. After that, the data will be processed. Then we'll get the output. But in algorithm, there are certain characteristics. One is input, another is output. The second one is definiteness. Third one is finiteness. Last one is effectiveness. An algorithm has a zero or more, but only finite number of inputs. सपोज मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि प्लीज मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी, right? That is a problem for you, but how you can do it? You have to do it sequentially. Am I right or not? ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ କହିବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହାଟେ ବନାଅ, ଯେତେବେଳେ ଚାହାଟା ବନେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଚାହା ବନେଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତମର ଇନପୁଟ କଣ ରହିବ? ସେ ଯୋଉ ଯାହା ଦେହରେ ଟିଟା ବନଉଛ ହେଲା, ସେ ପାନ ଭିତରେ ତମେ କଣ କରୁଛ, ସବୁ ପକଉଛ କି ନାଇଁ? ବା ତମର ଯୋଉ ଇଏଟା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଚାହା ବନଉଛ ଯୋଉଥିରେ ତା ଭିତରେ କଣ ଇନପୁଟ କଣ ଦଉଛ? ୱାଟର ଦଉଛ, ମିଲ୍କ ବି ଦଉଛ, ମିଲ୍କ ସୁଗାର ବି ଦଉଛ, ଟି ବି ପକଉଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମର ସ୍ପାଇସିସ୍ ତା ପକେଇବା କଥା, ଜିଞ୍ଜର ଫିଞ୍ଜର ତାକୁ ପକଉଛ କି ନାଇଁ? ସେଟା କଣ ହେଲା? ଇନପୁଟ। ହିଟ୍ କଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରୋସେସ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉଟପୁଟ କଣ ହେଲା? ଫିଲ୍ଟରେଟ୍ କରିକି ଯୋଉ ଚା ଟା ପିଇଲେ। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲଗୋରିଦିମ ଲେଖ। ଆଲଗୋରିଦିମରେ କଣ ତମେ ଆଗେ ଲେଖିବ ଇନପୁଟ। ଇନପୁଟରେ କଣ କଣ କଲ ନା, ପାଣି ଦେଲି, କ୍ଷୀର ଦେଲି, ଯାହା ଯାହା ତା ଭିତରେ ପକେଇଲ ସବୁ ଲେଖିଦେଲ। ଆଉଟପୁଟ ଟା ତମର ଗୋଟେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ବାହାରିବ କି ନାଇଁ? ଆଉ ଡେଫିନାଇଟନେସ୍ ମାନେ କଣ? ଇଚ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଜ କ୍ଲିୟର and unambiguous. ମାନେ କଣ? Each step of an algorithm must be precisely defined. ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଚାହା କରିବାକୁ ଯିବି, ଚାହା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ନିହାତି ଦରକାର, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଅଦର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ତାହେଲେ we cannot say that is an algorithm. Am I right or not, students? Hello? ବୁଝିପାରିଲ? yes, sir. ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ କାମକୁ ଯଦି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଭାବେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେପ ଦେଇକି ସଲ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ତାକୁ ଆଲଗୋରିଥମ। ଫାଇନାଇଟନେସ୍ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ କାମ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଯଦି ଶେଷ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ତାକୁ ଆଲଗୋରିଥମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ତାର ଶେଷ ହବ ନା ନାଇଁ?
तब देख तुम पाठ पढ़ारे जब एमसीए गल फास्ट सेमिस्टर पसले फिर 6 सेमिस्टर पर्यंत तुम सरीब ना नहीं बुझेला ना नहीं जब सर न हाँ सरला सेटा आम एल्गोरिथम कहि परिबा नहीं इफेक्टिवनेस कौन ना एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट very very basic so that can be carried out by a person using only pencil and paper effect every instruction must uh, very basic but instruction should be basic all persons should understand that particular instruction and we can say that is effectiveness right next you just go down here flow chart तमर जहाँ सिलेबस अच्छे से फ्लो चार्ट A flow chart is a graphical or symbolic representation of a program or a process or an algorithm. तमे algorithm टा जहाँ गोटे सपोज मु कहबी गोटे छोटिया कामटे मु छोटियाटे कहूची जे दुईटा नंबर सम बाहर करिबा दुईटा नंबर को हम कोन करिया कंप्यूटर को इनपुट करिया पड़िबो मु कहबी इनपुट ए बी माने ए बी को बेली दियो तापर तक प्रोसेस करो तापर आउटपुट आसला तमर कोन सम बुझेला ताले आमे ईच एंड एवरी प्रोसेस एवरी जेतबेले गोटे इंस्ट्रक्शन टा बा जहां भी कंप्यूटर को आमे दउचे कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन टा को एक्सेप्ट करके ताको प्रोसेस करके हमको आउटपुट दउचे ताले आमे एटी केतरा स्टेप्स जानिले गोटे एल्गोरिथम रो माने एटी मु कहबी दुईटा नंबर सम बाहर कर ताले तमे दुईटा नंबर को इनपुट दबो कंप्यूटर को जेमिति मु कहबी कैलकुलेटर रे 5 और प्लस 7 कल तमे कैलकुलेटर कोन कैलकुलेटर को डाटा 5 बोली प्रेस करछो कि नहीं फिर प्लस दौच फिर 7 प्रेस कर कि नहीं तापर जाके इक्वल टू माइले जाके आम कौन कर 12 देखुचे आउटपुट देखुचे तेणु आम इनपुट ये किए है 5 आउ 7 बुझीपार ना नहीं तापर 5 7 कौन हो प्रोसेस होची तापर आम कौन पाइला आउटपुट पाइले स्टूडेंट्स आम ऑडिएबल और नॉट मझे मझे हाँ हाँ मारथुव नले नेट fully audible yes sir fully audible sir तो सेतिपई मु तुम मझे मझे टिके एस सर हाँ सर एमती कहूथु तबे त नले कोन करे लॉगिन कर दे क्वार पळे आइथो क्लास घंटाटे सरी गेला क्वार पळे हला ना सर बहुत needed हमरो classes कोन हला सर हमर बहुत needed classes गुडा हां बहुत नीट क्लास होचे सेतिपई बुझे दोछ एटा पठै देबी तमे रखि दो तापर कोन हेछि पिला माने तमर इग्नोर कोन थाए बहुत लेस क्लास सब सब्जेक्ट रे दीटा तीनटा क्लास थाए बुझी परछ ना नहीं तम दायित्व होची कोन तमे पढिबो तम डाउट टा कोन हमकु पचारि आज पचारिबो केबे से दीटा तीनटा क्लास रे पढि के रखि पचारिबो हला यार बहुत कम तमे तो फर्स्ट सेमिस्टर पिला तमे जानि नथिबो तम व्यस्त होतो सेति पय मु तुमको एटा बुझे दोछि मने रख ओके तापर फ्लो चार्ट डेफिनेशन टा देखि A flow chart is a graphical or symbolic representation of a algorithm. Suppose if you write step by step, if you write step by step statement of a problem, you can say that is algorithm. Okay, the pictorial format of that particular algorithm is known as what? Flow chart. Each step in the process is represented by a different symbol and certain sort of description of the process step. The flow chart symbols are linked together with arrows showing the process and flow direction. You just see here this symbol, start and end symbol. An oval represents a start and end point. Arrows. All lines are connected that shows relationship between representative and shapes. Right? This is the input and output. Input and output. Parallelogram. The process symbol, this is the process symbol. Rectangle symbol is the process. Right? Rectangle symbol is the process. Next, decision symbol. The rhombus symbol is the decision symbol. Right? The rhombus symbol is the decision symbol. Students, did you understand or not? Tell me. yes sir yes sir What did
हेलो, ऑडिबल और नॉट? जी सर। Yes, sir. Audible. Yes, sir. यस सर। Okay. How can you write one flow chart? If I will give one problem, can you write one flow chart? See how you can write a flow chart. Just see, students, this is the whiteboard. Okay. Okay. This is this symbol. Sorry. This is the oval symbol. Okay, I'm drawing here. If if it is does not match, don't mind. Okay, drawing in the where in the mouse. Okay. Okay, this is the start symbol, right? Suppose I'm giving one example: c equal to a plus b. C equal to a plus b, right? C equal to a plus b means a is a variable, b is also a variable, right? B is also a variable. Then you have to write here start, right? Start, then कनेक्टर सिंबल. कनेक्टर सिंबल क्या है? यहाँ पे देखो एरो मार्क, राइट? एरो मार्क. उसके बाद मुझे क्या लिखना है? स्टार्ट के बाद क्या लिखना है? सपोज मैं कंप्यूटर को 2 नंबर देने के लिए चाहता हूँ, स्टार्ट, उसके बाद मुझे क्या करना ही पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा. इनपुट देना ही पड़ेगा. तो इनपुट के लिए सिंबल देखो क्या है. इनपुट के लिए सिंबल क्या है? देखो इनपुट के लिए ये क्या है? पैरेललोग्राम डायग्राम. पैरेलल. हाँ, ये क्या है? इनपुट. देखो ये फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है? एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल किसको बोला जाता है? अल्फाबेट. c इक्वल टू a प्लस बी, राइट? c इक्वल टू a प्लस बी मीन्स a भी एक वेरिएबल है, b की एक वेरिएबल है, c भी एक वेरिएबल है. समझ सकते हो ना? नहीं? ओके. राइट. देखो इसमें इक्वल के बाद कौन सा वेरिएबल है? ए बी. तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना ही पड़ेगा? इनपुट, इनपुट, Input A. इनपुट, इनपुट ए एंड बी. इनपुट क्या? ए कॉमा A and B. बी, जी राइट? देखो ये है पैरेललोग्राम डायग्राम. थोड़ा ये ऐसे होगा. देखो ये सिंबल, 2 स्क्रीन तुमको दिखाई दे रहा है ना? एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दोनों स्क्रीन एक स्क्रीन नहीं में होगा. दिखाई दे. दोनों स्क्रीन दिखाई देगा. स्क्रॉल करो, तुम्हारा स्क्रॉल करो. दोनों गायब हो गया. हाँ मैं दे रहा हूँ. देखो दोनों स्क्रीन आ रहा है. इससे बहुत छोटा है. हाँ तो होगा. हम लोग क्या करेंगे? हमारा तो लैपटॉप में हम बताते हैं ना. ओके, ये देखो इनपुट ए कमा बी. देन देखो इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेस होगा. प्रोसेस क्या है? द फॉर्मूला इज द प्रोसेस. प्रोसेस के लिए सिंबल क्या है? देखो यहाँ पे देखो प्रोसेस के लिए सिंबल क्या है?
प्रोसेस के लिए सिंबल क्या है देखो, rectangle, प्रोसेस के लिए क्या सिंबल है? rectangle. रेक्टेंगल सर। हाँ, वही रेक्टेंगल सिंबल देना ही पड़ेगा। तो रेक्टेंगल सिंबल यहाँ पे करो। मेरा ये जो देखो, मुझे माउस में मैं कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा सिंबल अच्छा नहीं हो रहा है। जब मैं इसमें करूँगा ना, पेन में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऑफलाइन में अच्छा होगा, ये तो ऑनलाइन में थोड़ा। हाँ ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस में क्या लिखना ही पड़ेगा? सी इक्वल टू C = A + B. ए प्लस बी। राइट, हो गया। देन प्रोसेस के बाद क्या होगा बोलो? प्रोसेस के बाद Output. क्या होगा? डिसीजन सर। Condition. फिर हाँ, कनेक्टर एक में ये कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, कनेक्ट यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैंने कनेक्टेड कर दिया। ओके, तो इसके बाद क्या होगा? डिसीजन क्यों होगा? प्रोसेस हो गया, आउटपुट। डिसीजन जब होगा तो इफ कंडीशन आएगा तो डिसीजन होगा। तो उसके बाद मुझे फिर क्या लिखना ही पड़ेगा आउटपुट के लिए? उसको ही लिखना ही पड़ेगा। क्या है आउटपुट? क्या आउटपुट? आउटपुट किस में है? C. C. हाँ, आउटपुट सी। कैसे हो रहा है देखो, आउटपुट सी। तो देखो ये राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है इनपुट होगा, फॉर्मूला इज द प्रोसेस, आउटपुट इज द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। देन फिर मुझे क्या लिखना ही पड़ेगा? फिर क्या है? स्टॉप। फिर क्या लिखना ही पड़ेगा? स्टॉप। सर ओके, समझ सकते हो ना? नहीं? जी बिल्कुल सर। हाँ, ये है देखो, इसीलिए ये कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल सी इसीलिए रहता है। राइट, नेक्स्ट चलो, ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। चलिए स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज इज ए जनरल पर्पज एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची at AT&T Bell Laboratories in the 1972 in USA. It is also called as procedure-oriented programming language. Okay, C language actually it has lot of features. One is portability, flexibility, effectiveness, efficiency, reliability, interactivity. ये पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। उसको हम एनी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो और रन करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी मींस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, जो कॉम्प्लेक्स का जो प्रॉब्लम होता है हम सी में भी सॉल्व कर सकते हैं। और आजकल तो इतना लैंग्वेज आ गया है मार्केट को, पाइथन पाइथन, इसमें बहुत इजी से सब काम हो जाता है। आजकल लोग सी कोई नहीं लेकिन सी सबको पढ़ना ही पड़ेगा, जरूरत है। बिकॉज इसमें जब तुम्हारा नॉलेज अच्छा रहेगा तो तुम हर लैंग्वेज को डाइजेशन कर पाओगे। राइट, तो दीज आर द व्हाट सी लैंग्वेज का जो क्या है, उसका जो फीचर्स है, पोर्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इफेक्टिवनेस है, रिलायबिलिटी है, इंटरएक्टिविटी। तो नेक्स्ट विल मूव टू execution of C program. C program executes in the following 4 steps. First, create program. पहले हमको एक प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा, उसको कंपाइल करना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक लिंक प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, उसके बाद हमको रिजल्ट ही मिलेगा। पहले प्रोग्राम को लिखना ही पड़ेगा, उसको फिर क्या करना ही पड़ेगा? सेव करना ही पड़ेगा, .c में सेव करना ही पड़ेगा, उसको कंपाइल करना ही पड़ेगा, फिर उसको उसका जो कंपाइल करने के बाद लिंकिंग है प्रोग्राम टू लाइब्रेरी, ऑटोमेटिक जो लाइब्रेरी में लिंक हो पाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। राइट, देखो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज 1960 में क्या आया? अल्गोल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ था। ये अल्गोल मींस एल्गोरिथम लैंग्वेज से सीपीएल लैंग्वेज आया। सीपीएल है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया। फिर इसके बाद बीसीपीएल हुआ। ओके, मार्टिन रिचर्ड उसको डेवलप किए थे। 1970 में बी लैंग्वेज केन थॉमसन डेवलप किए थे। फिर उसके बाद 1972 में क्या? सी लैंग्वेज डेवलप हुआ। ओके, तो सी लैंग्वेज का एक्चुअल Dennis. ओरिजिन, हाँ, डेनिस रिच। राइट, उसको डिस्क्रिप्शन हुआ है देखो।
Next, we'll move to structure of C program. The basic structure of C program follows as first you have to write the documentation section. Means whenever if you want to write a program, at this stage you have to write the program within a comment line. That comment line, compiler cannot understand. What you can understand? Compiler can understand that is the user language. Suppose if you want to solve a problem, area of the circle. Suppose मैंने तुमको एक task दिया कि find out the area of the circle. What you have to do? First you have to write the questions. The question here, the question section is known as documentation section. Next, link section. Link section क्या है? You have to write there hash include str.h, conia.h, right? If you write that particular header files, then in that particular header file some functions are defined. Okay? If you write that header file, then some functions defined in that header file can executed in your program. Can be executed in your program. Next, definition section. If you want to define a specific symbolic constants, you can define also here. Global variable declaration section. Next, main function section. Giving one example here. Suppose one program, I am showing one program at that you can understand. Suppose if you want to write the area of the rectangle, write a program to find out area of the rectangle. Area of the rectangle. Right? This section is known as documentation section. Right. This section is known as what? Documentation section. Next, you can specify your link section. Has include stdio.h, has include conio.h, right? Has include whenever you want to assign your mathematical function, then math.h, you can also assign. Okay. Okay. Next, void main section. Suppose if you want to find out the area of the rectangle, first you have to declare three variables: L, B, A. You just find out the formula of the area of the circle. Find out. Suppose I am writing here area of the circle formula. Formula writing. You can say what is the area of the rectangle formula? Area of the rectangle L into B. L into B. L into B. You just see the formula. A equal to L into B. That's why you have to declare three variables into L, A, B. Right? You just see the formula. Is it visible or not? What I am selecting, are you seeing? Are you observing or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. How many variables are there? Three variables. You have to declare three variables. Three variable. After the declaration variable, what we have to do? मैंने बोला था कि स्टार्ट के बाद हमको क्या करना है? इनपुट करना है, राइट? इनपुट करने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना है? स्कैनफ फंक्शन. Scanf. मैं जो बता रहा हूँ पहले सुनो, यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, सुनो, सब सुनो. बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर प्रिंटर पे एंटर द नंबर्स लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखते हैं आप? मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं जो बता रहा हूँ पहले सुनो. जो ये जो इनपुट में करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो इनपुट होगा.
एल्गोरिथम में जैसे मैं इनपुट लिख रहा था, यहाँ पे मुझे स्कैनफ लिखना ही पड़ेगा। फिर मैं कौन सा परसेंटेज दी क्यों दे रहा हूँ, इसका मीनिंग है मुझे दो इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है। कौन सा वेरिएबल को ना, एम्परसेंड एल कॉमा एम्परसेंड बी, राइट। एम्परसेंड एल कॉमा एम्परसेंड बी इनपुट हो गया। देन एरिया इक्वल टू फॉर्मूला, देन इनपुट के बाद व्हाट यू हैव टू राइट योर फॉर्मूला, ओके, एल इंटू बी, एल इंटू बी। देन printf the sum, or sorry, the area of the rectangle is equal to this is for declaration, this line for input, this line for process, this line for output. Did you understand? If you know the formula, you can write all the programs like this. If you want to input three variables, you have to write the percentage, three variables. But this is input. Before going to input, you have to specify here a message. Printf enter value for A and B, right? तो टेल मी, यहाँ पे देखो मैं जो बताया, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, दिस वन। लिंक सेक्शन कौन है? लिंक सेक्शन इसमें क्या है? ये दोनों है लिंक सेक्शन। उसके बाद देखो दो सेक्शन को मैंने स्किप किया हूँ, जरूरत नहीं है यहाँ पे। डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। उसके बाद कौन सा सेक्शन आया? मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन लिखा। मेन फंक्शन के बाद मैं जब तुमको बताऊंगा कि सब सेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट सब सेक्शन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट क्या है, मैं बाद में बताऊंगा, जब प्रोग्राम आएगा तो मैं बताऊंगा। तो इसमें देखो प्रोग्राम एल्गोरिथम को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोग्राम को क्या किस में लिखते हैं? जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज को यूज करके हम लिखते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक टैक्स तुमको, ये देखो, ये तो टैक्स को तुमको करना ही पड़ेगा। फिर देखो ये तो एक दो क्लास में मुझे करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, एक लाइन यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ, रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, देखो ये है वेरिएबल, ये लाइन क्या है? वेरिएबल। इसमें क्या लिखा गया है? पढ़ो। एक स्टूडेंट में जिसका नाम बोलोगा तो कोई पढ़ेगा। आशुतोष दास, इसमें क्या लिखा गया है? रूल्स फॉर वेरिएबल। हेलो? First character should be letter or alphabet. हाँ देखो ये जो फर्स्ट कैरेक्टर तो मैंने इंट एल बी लिखा हूँ, एल बी ए, ओके। यू कैन ऑल्सो राइट लेंथ, ब्रेथ, एरिया। इफ यू राइट योर लेंथ, देन फर्स्ट कैरेक्टर एल शुड बी लेटर और अल्फाबेट, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट, हाँ Next, नेक्स्ट keywords are not allowed to use as a variable name. देखो यहाँ पे इंट इज ए कीवर्ड। मैं सपोज मैं चाहूंगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इंट, इट इज इम्पॉसिबल। सपोज आई वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इंट, then int semicolon, it is invalid. It is invalid, right?
नेक्स्ट नेक्स्ट White space is not allowed. देखो मु जदि int रोल नंबर नेबी रोल नंबर इससे वेरिएबल नहीं डिक्लेयर होता है दिस इज इनवैलिड वेरिएबल नेम means so if you want to declare a variable name roll number then you have to write like this roll number consecutively otherwise roll underscore number That means no spaces are be there. roll underscore number clear next C is case sensitive, or upper and lower case are significant significant. हाँ means lower case letter upper case letters ओके यहाँ पे सिग्निफिकेंस मींस सेंसिटिव केस सेंसिटिव मींस लोअर का मतलब जो होता है अपर का मीनिंग वही नहीं है तो यहाँ पे वेरिएबल नेम यू कैन राइट आल्सो लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर्स राइट लोअर केस लेटर्स एंड अपर केस लेटर्स नेक्स्ट Only underscore special symbol is allowed between two characters. तो दिल्ली एड देइछि देखो यू जस्ट सी हियर आई हैव गिवन यू The length of identifier may be up to 31 characters. But a roll number is also the variable name is also known as identifier. How many characters I have given here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 okay maximum हम 11 characters दे सकते हैं नहीं 31 characters और small is beautiful जितना छोटा देना है उतना ही अच्छा है उसके बाद देखो the first 8 characters are significant, but compiler then sir दिख नहीं रहा एक्चुअली साइड करने से दिखेगा. हाँ ठीक है वो एक्चुअली क्या है अभी यू कैन सी आल्सो But it is recommended to use maximum 31 characters in variable name. Large variable name leads to occur errors. मीन्स वो बोल रहा है कि मैं मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स यू कैन टेक बट इफ यू वांट टू टेक मोर देन 8 कैरेक्टर्स इट मे लीड्स टू एरर मींस सपोज मैं लिख रहा हूँ कि एक वेरिएबल नेम जो जितना बड़ा दूंगा तो टाइपोग्राफी मिस्टेक हो जाएगा जब टाइप करने का टाइम में जब ये वेरिएबल नेम जब गलती हो जाएगा तो एरर दिखाएगा इसीलिए जितना छोटा रहने से सही होगा Then keywords are the system defined identifiers. keywords कौन system defined identifiers means किछि वर्ड अछि जेमति एडी int लेखिली int for integer int को आमे आउ तक चेंज करि परिबा नाही int means int किछि वर्ड अछि जोथरे कि सी लैंग्वेज रे सेमान को मीनिंग को सिस्टम रे चेंज करि होनी सेगुडा कीवर्ड कहबा सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड सपोर्ट करे दीज आर द कीवर्ड्स 32 keywords Then sir all keywords have fixed meanings that do not change. White spaces are not allowed in keywords. that things I have discussed now Okay, then we'll go to the escape sequence characters / character contents in C. slash a slash b slash f slash n slash t slash v ये सब कैरेक्टर सीक्वेंस कैरेक्टर्स माने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोली कहै त कोन ना मु तुमको कोन करबी ना एगुडा करो गोटे रन करी गोटे प्रोग्राम काली देखै देबी एगुडा सब बुझी परिबो एटा को छाडी दे तो रन करी की देखैले तुम जानि परिबो नले मु स्लैश एन कहि क्रिएट्स ए न्यू लाइन कोन बुझिबो प्रोग्राम करी की रन करी देखै देबी एबे थ्योरी टा चालू काली रन टा करी देखै तबर कांस्टेंट इन से देख A constant is an entity that doesn't change during the execution of a program. Example, define pi. Has defined pi 3.141 means a माने होची has defined pi 3.1411 3.141 टा ए pi भितर आसे नहीं गला
A pi टाको प्रोग्राम रे जो यूज करिवो that is 3.141 but that constant cannot be changed ठीक है constant तो constant को change कैसे होगा right there are different types of constants real constant integer constant character constants string constants okay next we'll move to data types in C. You can say what do you mean by data types पहले बोलो मैं उसको बता देता हूँ डोंट रीड आशुतोष ना आशीष ना कौन योर नेम Asutosh sir. आशुतोष ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ explain କରୁଛି data who can say what do you mean by data what do you mean by data Data is the input which you are giving. no the raw facts and figures of any object suppose if the student will be an object the name is also the name is data of that particular student roll number is also data of that student okay mark is also like data of the particular student right did you follow my point or not data means the if student will be an object his or her name is data his or her mark is data roll number is also data right collection of data is known as what information Information. फिर data types क्या है what are the different types of data we can input through keyboard into the computer okay into the computer जैसे रोल नंबर में बोलूंगा व्हाट्स योर रोल नंबर 39 दैट इज एन इंटीजर डाटा मैं बोलूंगा कि व्हाट्स योर नेम माय नेम इज आशुतोष दैट इज ए वर्ड दैट इज स्ट्रिंग डाटा दैट इज ए वर्ड स्ट्रिंग डाटा मैं बोलूंगा कि आशुतोष what's your native place so my native place is Kotak is a what string data मैं बोलूंगा कि आशुतोष what's your address sir IVR 27 plot number 36 alphanumeric data alpha ଆଉ numeric both ମିଶିକି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କି ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଦେଇପାରିବା right there are three types of data types in C language one is primitive or basic data types user defined data types derived data types this is the example of what basic data types just character int float long double okay these are basic फ्लोट कौन फ्लोट आमे जति फ्लोट ता कौन फ्लोट जति आमे गोटे नंबर हैविंग डेसिमल पॉइंट थिबो मु कभी 12.5 दबा को कंप्यूटर चाउ सेडा होची फ्लोट डाटा मु जति -12.5 देबी दैट इज ऑल फ्लोट डाटा डबल भी सया व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल ना फ्लोट रे आफ्टर डेसिमल आमे 6 डिजिट्स पर्यंत दे परिया कंप्यूटर किंतु मु कोची आफ्टर डेसिमल पॉइंट मु जति 12 डिजिट्स पर्यंत हो चाहिए 12.5799238478 एमती गोटे डाटा दବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇ ସିଚୁଏସନ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଡବଲ ନବ ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ 6ଟା ଡିଜିଟ୍ସ ପରେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଡବଲ ନବ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଟାର ଟାଇପ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ସେମିତି ନବା ଡାଟା ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ରନ୍ କରି ଗୋଟେ ଯଦି ହବ କାଲି ରନ୍ କରି ସିଟା ବୋଧେ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋ ଲାପଟପରେ ଲୋଡ୍ କରିନି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି କାଲିଟା ରନ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି କାହିଁକି ତାକୁ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ଇଏ ନିଆଉଛି କେତେ ସ୍ପେସ୍ ସେ ଅକୁପାଇ କରେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି ଅପରେଟର ସେନ୍ସ actually basically who can say what is operator is nothing but it is a symbols okay it is a symbol that perform the mathematical operations operator is a symbol that performs the like specific mathematical and logical manipulations she supports 8 types of operators one is assignment arithmetic logical a relational increment decrement conditional bitwise
special operators. Another operator is also relational, logical, conditional, bitwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 types of operators. 7 types नहीं 8 types हो थोड़ा सा गलती से टाइप 8 types of operators राइट देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है यहाँ पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या है सिंगल इक्वल Equal, sir. हाँ सिंगल इक्वल इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन Minus डिवीजन ये परसेंटेज सिंबल का नेम क्या है percentage. मॉडुलो डिवीजन राइट ये लॉजिकल ऑपरेटर्स डबल एम्परसैंड डबल पाइपलाइन not similar logical operators these are relational operators right less than greater than less than equal to double equal to not equal to this is the symbol of not equal to increment decrement operator plus plus minus minus conditional operator bitwise operator special operators right yeah, these are the operators already just I explained it control structure statements you can say what do you mean by control structure there are 3 types of control structure. What is the use of control statements in the program? It is used to specify the condition. If you want to specify the condition in your program, at this stage, you have to use decision-making statements. There are 3 types of control statements. One is decision-making, looping, jumping. These are control structure statements. Control structure or control statements. Right. Now I'll discuss about decision making statements. क्या है? If statement is also decision making statement. If else, nested if else, else if ladder, switch case, these are decision making statements. Right. If statement, the syntax is if condition statements. If the condition is satisfied, then the body of the if is executed. Otherwise, the control will move to nothing. Control will move to out of if. If you use your if else, if the if condition is not satisfied, then the control will move to else statements. नेक्स्ट अरे समझ सकते हो ना नहीं काल में उसको एक एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा राइट जी सर दीज आर द थ्योरी क्लास मैं काल प्रैक्टिकल क्लास करके एक प्रैक्टिकल करके तुमको दिखाऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अदरवाइज थोड़ा सा सी लैंग्वेज देखो 1-2 क्लास में उसको समझने के लिए तुमको टाइम लगेगा इफ यू नो द दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू कैन अंडरस्टैंड if you do not know anything then it will be difficult for you okay so no problems tomorrow I'll run that particular program I'll explain bit wise step wise okay step wise I will explain you can understand also you can write a program immediately I think it will जितना मैंने बताया अभी पढ़ाया उसको थोड़ा सा जाके बुक पे रेफर करो you can understand clear समझ सकते हैं ना नहीं how many students already you have submitted your assignments tell me कौन एक तो आशुतोष कर चुका है और बहुत स्टूडेंट्स काम भी किए लेकिन बहरामपुर में किए सर बहरमपुर में किए हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तुम जाके उनको मांगो कि हम लोग का स्टडी सेंटर वहाँ पे हो गया है आप लोग जब यहाँ पे हमारा असाइनमेंट को क्या इवैल्यूएट कर पाएंगे तो अच्छा है जब इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो हमको वहाँ पे दीजिए आई थिंक दे कैन इवैल्यूएट दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट बिकॉज एक्चुअली उनका पास भी वही पहले से था ना तुम जाके थोड़ा पूछो कि सर मेरा वहाँ पे हो गया
हाँ, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते? नहीं, आप इवेलुएट कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, उनको बोलना चाहिए। सुनो These एक, are those people are little हाँ careless, sir. That is the हाँ, problem. सुनो स्टूडेंट सुनो, मैं एक तुमको बात बोल रहा हूँ। पहले चलो देखो तुम्हारा स्क्रीन में, देखो टॉप टॉप में, राइट टॉप को चलो, एक कितना स्टूडेंट ज्वाइन किए दिखाई दे रहा है जिसका मोबाइल में, नीचे देखो, और एक मिडिल में चार्ट विथ एवरीवन लिखा गया है, वहां पे चलो, चार्ट विथ एवरीवन, टाइमिंग के पास चार्ट विथ, जो लैपटॉप में खुला है देखो, जो इसमें ओपन किया है, किसमें, मोबाइल में, देखो चार्ट विथ एवरीवन कहां पर लिखा गया है। मिला तुमको ना, नहीं मिला? सर यस सर, मिल गया। मिल गया। यहाँ पे तुम्हारा No, पहले, sir. हाँ पहले तुम्हारा नेम एंड रोल नंबर लिखो, ऐसे करके लिखना है। नेम, मैं हाइपन दे रहा हूँ, नेम लिखना है, राइट, समझ सकते हो ना? नहीं, नेम लिखना है, फिर क्या करना है, ऐसे नेम, और नीचे क्या लिखना है, रोल नंबर, ऐसे करके लिखना है। लिखो, नेम क्या है, रोल नंबर, सॉरी नेम एंड रोल नंबर लिखो। नेम रोल नंबर देख के लिखो। दिस इज योर अटेंडेंस, वो जाएगा दिल्ली। सर ये चैट नहीं दिखा रहा है मेरा। छोटा जाएगा, हाँ हाँ हाँ, चार्ट विथ एवरीवन, हाँ चार्ट विथ एवरीवन में पहले तुम्हारा नेम लिखो, उसके नीचे रोल नंबर। सर नहीं नेम दिखा रहा है। नहीं, Sir, we don't नहीं find दिखा, it. कैसे नहीं दिखाएगा, देखो लिखा है, देखो तुम्हारा सर, आप पे देखो, अरे चार्ट विथ एवरीवन है, देखो जहां पर people से उसके बाद चार्ट विथ एवरीवन है, पीपुल लिखा गया है, कहां पर देखो, पीपुल चार्ट है, देखो ढूंढो। मैं मैं मोबाइल में तुमको दिखा रहा हूँ। सर मोबाइल में वो जो 3 डॉट है उसमें क्लिक करने से पिन कॉल मैसेजेस में शायद हाँ देखो 3 डॉट्स में, देखो वो जो बोल रहे हैं, देखो मोबाइल में जो 3 डॉट्स में है क्लिक थ्री करने से डॉट्स है। इन कॉल या द फर्स्ट ऑप्शन हाँ से इन कॉल जी, मैसेजेस उसमें सर। हाँ हाँ देखो, आशुतोष कह दियो तांको को बताओ से लिखो तो, हे बहुत पिला लिखी जालेनी, अब लेखो, दैट इज योर अटेंडेंस, राइट। हर दिन जब सर क्लास लेंगे ना, सर मेरा है ना सर, देखिए थोड़ा हाँ जॉर्ज हाँ, लिमा। मिल गया जी तुम्हारा, सर। नहीं उसका आ गया, तपस्विनी पाड़ी का आ गया, आशुतोष का आ गया, जॉर्ज लिमा का भी आ गया, तीनों का जी आ गया। जी हर दिन हर टीचर जब तुम्हारा क्लास लेंगे तो पहले तुमको क्या करना है, वो जब नहीं बोलेंगे तो यू हैव टू राइट योर नेम एंड रोल नंबर, दैट इज योर अटेंडेंस। मोनिका दास, हेलो, जी सर, जी सर, नहीं आ रहा है मेरा। नहीं आ हेलो, रहा तो 3 डॉट में क्लिक करो, उसमें इन कॉल मैसेजेस है, वो 3 डॉट है राइट साइड पर है वो। है, इनकल मैसेज आएगा, देखो और एक बार बोल दो, आशुतोष कहाँ पर है उनको बताओ। सर मोबाइल में डाउन में राइट साइड का डाउन में 3 डॉट है, उसमें क्लिक करने से सिक्स देखो कॉल वो दिखाई देता है, उसका पहला तीन ऑप्शन डॉट होता है, है। 3 डॉट, डॉट 3 डॉट दिखाई दे रहा है, देखो। इन कॉल मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ, वही इनकल हाँ मैसेज, उसमें उसमें वही क्लिक करो, उसको क्लिक करो। उसको क्लिक करके नेम लिखवाना है। जाओ, जाओ जाओ। सब लिखने के बाद मैं ट्वीट करूंगा, नहीं लेकिन वो जी 1 घंटा का ये है ना, टाइमिंग दिया हूँ, 8 o'clock हो सर गया। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା। मत तमे कॉल करके कहबो, एटी माने रिकॉर्डिंग चलछि तो क्लास रे, ଆଜ୍ଞା तमे मते ଆଜ୍ଞା कॉल करके हाँ, ଆଜ୍ଞା मे भी एटा को यूट्यूब रे भी हमें डाउनलोड करि पार, माने अपलोड करि पार एठी। ଆଜ୍ଞା अब एबे कॉल करबनी, काली कॉल कर, ଆଜ୍ଞା and any problem you ask me, I will help, okay? ଆଜ୍ଞା। Double 03096। हो गया सबका, नेम रोल नंबर लिखना खत्म हो गया, देखें 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 ଆଉ କାର ହେଲାନି मोनिका हुआ नहीं सर हो रहा नहीं है चल रहा है हाँ लिखो ମାମା ବାପା ମାଇଁ ଚା କର ମାମୁଁ ତ ଫୋନ ଯାଉଛି रेकर्डिंग चली म्यूट करके कथा सरीला खाली तुम रोल नंबर लिखि दियो मोनिका आगे सर लिखु ना तुम रोल नंबर खाली रोल रोल नंबर नंबर सर नाट लिख दे रोल नंबर टा मन पड़नी हाँ तो नेम टा लिखि दियो नेम लिखि दियो सेठी ये कर दबो हला शीघ्र लिख ठीक अच्छे हाँ थैंक यू स्टूडेंट्स ओके थैंक यू जी सर थैंक यू वेरी मच सर। हाँ थैंक यू ज्वाइन थैंक यू करो थैंक यू आज सर। मैं जो बताया जो पढ़ाया थोड़ा थोड़ा समझ पाते हो कि देखो ऑनलाइन ऑफलाइन इज वेरी तुम लोग तो पता है कि ऑनलाइन में क्या तुम समझ पाओगे ऑफलाइन में क्या समझ पाओगे तो आज मैं जितना बताया बताया पढ़ाया डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट कुछ कुछ यस हाँ सर ठीक ये है सर ये यस सर सर थैंक यू थैंक यू हाँ तो बुझी पाइला भाई माने हेलो आशुतोष हां किछटा डाउट रहला सार को काली पचारिया पड़िबो तोर होबे म्यूट रख अरे हाँ मु म्यूट रखी मो जो रोल नंबर मन नथिला तो हम्म हम्म हटा